This is the beginning for Renu, a young CRPF woman personnel hailing from Uttarakhand. A realization of her self-worth in a society and a setup that wasn't ready to recognize or accept her aspirations. बड़ा भाई तो वो उसको पसंद नहीं ज़्यादा कि मैं इधर हूँ। वो सोचता है कि एक बहन है मेरी, छोटी बहन है, तो जो बोलेगी मैं दूंगा, लेकिन तुझे क्यों करना है? लेकिन मुझे खुद से करना है ना। फिर मैंने यही बोला कब तक करेंगे, मेरे को भी तो अपना उसमें मतलब खुद से वो करना है। Like Renu, there are other women in the remote areas of different parts of India that had the same aspirations, who struggled to break the shackles of the traditional setup by their surroundings. गांव वाले तो ऐसे थे कि लड़कियां फौज में जाएंगी ये वो बोलते थे, लेकिन मेरे घर वाले पहले से ही मुझे सपोर्ट करते थे। मैं पहली लड़की हूं जो कि हमारे गांव आसपास की पहली लड़की आई है फौज में। The print traveled to different CRPF bases in Kashmir, Manipur and Chhattisgarh to meet such women who joined the CRPF and find out what they feel about their choices. In these three theatres, CRPF women personnel have been deployed in huge numbers. There are a total of 6 Mahila battalions in Central Reserve Police Force, of which a major chunk is present in Kashmir. Hello and welcome to The Print. My name is Urjita Bhardwaj and I am with my colleague Manisha Mondal in Kashmir. And now we will try to bring their lives by documenting their daily activities, what kind of training do they go under, and what are the hardships and the challenges they face while working in this terrain. Joining the CRPF is not only the question of fulfilling one's aspirations. It is about hard work, commitment, discipline, and most importantly, as they say, balance. Many of them are married who have families waiting for them back home. Shashi is one of them. She wears ski shirts and trousers on duty, and when back at home, she wears colorful saris, assuming roles of a wife, daughter-in-law, and a mother. Shashi is among thousands of Central Reserve Police Force women personnel who wear these multitudes with pride. They defend India's troubled terrains with the same gusto with which they guard their children at home. मैम, जैसे मैंने यूनिफॉर्म पहन ली तो मेरा फ़र्ज़ यूनिफॉर्म के प्रति हो गया। वैसे ही मैं घर जाती हूँ तो मेरे घर का जो कल्चर है साड़ी पहनने का है, पर्दा करने का है, तो मैं उसी को फिर फॉलो करती हूँ। साड़ी पहनने के बाद मैं एक हाउस वाइफ की तरह ही बिहेव करती हूँ और हाउस वाइफ की जो भी ड्यूटियाँ होती हैं, घर का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, हस्बैंड का ख्याल रखना, वो सब मैं अपना एक मंथ में पूरा 100% वहाँ देती हूँ जब मैं छुट्टी पर होती हूँ। यहाँ आने के यहाँ देती हूँ। ये दोनों को मैं अपनी समझ से, जैसे मतलब खुद की समझदारी से दोनों को बैलेंस करके रखी हूँ। हाँ, घर पे देख के जैसे बाकी लोग देखते हैं तो विश्वास ही नहीं कर पाते कि जॉब भी करती हूँ। जॉब करती है या विश्वास ही नहीं कर पाते कि जॉब करती है, कभी बंदूक भी हाथ में ली है या कभी गन भी चलाई है, वो विश्वास ही नहीं करते। In the barracks of Detachment Unit 135 in Srinagar, the day starts as early as 4 a.m. In the dark, freezing cold outside, women personnel get ready with brisk efficiency. और सब ड्यूटी जाने को तैयार हैं? यस मैम। सावधान। The big blue bulletproof vehicle will take them to their posts at vital installations in Srinagar city. This battalion is stationed at the Central Telecom Office, Shankaracharya Temple and the radio station. Deputy Commandant Yamini, who commands this battalion, is a mother-like figure at Detachment Unit 135. But far away from the home at force, she has another family. Generally, I kept my daughter with me, like, because I am in this ops area, like, so I have kept her with her father. But मैंने उसे बचपन से आदत डाली है कि उसको परिवार के साथ रहने की। जैसे वो 2.5 महीने की थी तो मैं कभी अपने घर छोड़ के, कभी ऐसे करके, या फिर कभी 1 साल की थी, 1.5 साल की थी, तो उसके फादर ले जाया करते थे अक्सर उसके घर पे, उसके गांव पे, उसकी दादी के पास. सो इट्स लाइक शी इज़ इन हैबिट ऑफ, शी इज़ हैविंग हैबिट ऑफ लिविंग विदाउट मी, लाइक. सो यस,
she knows. She's know this is my job. Like, she's know this is my job. While Yamini and officers her age have served in the force for quite a long time, in Manipur, a new generation of female novices is learning the ropes. After Kashmir, we are in Manipur. Behind me, you can see this is the famous Loktak Lake. We in Kashmir stayed with CRPF women. We showed you their challenges, hardships, and their life. Now in Manipur, the terrain has changed. There are new set of difficulties, hardships, and there is a different life here. Manipur is not an ops area like Kashmir. There are no battalions here. There is only one company that operates from here, and its headquarters is in Nagpur. But there are women commanding officers. Although women in Manipur sector go through the same training, the challenges are different from Kashmir and LWE region. We will walk you through the lives of CRPF women in Manipur. Novi, a young CRPF personnel from Mizoram deployed in Manipur, portrays an unmissable set of strength and endurance during BOAC. Her energy never flags, whether she is scaling a wall or springing from rock to rock despite a 3 kg rifle slung across her shoulders. When she shoots, she does not miss. The bubbly one among her peers, Novi hides a life of hardship under her cheerful exterior. She joined the CRPF when her child was only 6 months old. जब हमने वो फिजिकल किया था उस टाइम हम अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से लेके रात 8-9 बजे तक हम लोग वही फील्ड पे थे. तो उस टाइम मुझे मतलब अपना बेटी को छोड़ना पड़ा था. उस टाइम आई थिंक शी वाज 6-7 मंथ थे. तो उस टाइम तो ब्रेस्ट फीडिंग चालू था. तो सुबह मैंने मतलब जिस ग्राउंड पे हम लोग असम राइफल ग्राउंड पे थे वो हमारा घर का बगल ही था, मतलब सिटी पे. तो हम लोग थोड़ा लेट गए थे, बच्चों को सब पिला के गए. फिर पता ही नहीं था कि हम उधर से दूसरा जगह शिफ्ट करेंगे करके. फिर हम लोग को लेके गए थे और पूरा दिन उधर में था. और रनिंग भी मतलब जितना होना था उतना भी नहीं हो पा रहे थे, बिकॉज 5 बजे से लेके हम लोग ने शुरू किया था 8-9 बजे लगभग. तो फिर उसमें तो मतलब My breast was so hard that time. Even milk भी ऐसे ही निकाल रहे थे. मेरा दीदी भी थे उस टाइम. तो मैंने उसको भी बताया था हो जाएंगे करके, वो भी बोला था. तो मैंने मतलब एक ब्रेस्ट में मैंने हम लोग में एक गमछा लेके गए थे, टॉवल, फेस टॉवल समथिंग. तो मैंने उसको ब्रेस्ट में भी रखा था. तो बगल वालों ने पूछा था कि क्या हो गया आपको. मैंने ऐसी सिचुएशन बताई कि मेरा बेटा ऐसे है, ब्रेस्ट फीडिंग टाइम है भी. तो उन लोग मतलब वो सुन के शौक भी हो गया था कि ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब कैसे अभी रनिंग के लिए आए करके. मतलब दे फील शॉक अबाउट दैट. CRPF officials say that since 2018, in the wake of the rising threats and women's stone pelters, the deployment of female personnel has doubled in the region. Checking, frisking, riot control are integral parts of the CRPF's fixed duties. Since 2021, women have been brought under Valley QAT or Quick Action Team 2. Today, there are 18 women and 108 men in the Valley QAT. जो CRP की ड्यूटी है वो है सर्चिंग, फ्रिस्किंग, राइट कंट्रोल जो महिलाएं करती हैं. और वैली क्यूएटी में एडवांस ड्यूटीज़ हैं. इसमें कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, कॉर्डन लगाना, सर्च करना और श्रीनगर के अलग अलग एरिया में जाना, गाड़ियों से उतरना, चढ़ना, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है. हमारे CRP में क्या है, फ़िक्स पोस्ट है, फ़िक्स ड्यूटीज़ हैं. सुबह जाना है, एक फ़िक्स टाइम पे वापस आना है. जो भी ड्यूटीज़ है वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं या किसी प्रकार की सरकारी संस्थाएं हैं, वहीं पे ड्यूटीज़ हैं. यहाँ पे मेन जो काम है मिलिटेंट न्यूट्रलाइज़ करना, टेररिस्ट न्यूट्रलाइज़ करना, उन पे नज़र रखना, कोवर्ट ऑपरेशन करना, OGWs को पकड़ना, इन चीज़ों को बारीकी से समझना. इसलिए ये ड्यूटीज़ उनसे अलग हो जाती हैं. Valley QAT commandos Hetal and Gauri, whose names have been changed,
explain how their 2 postings in the CRPF in Srinagar have been completely different. हर श्रीनगर में हर जगह हमें अलर्ट ही रहना पड़ता है, लेकिन जैसे कि ये हमामा हो गया, ये लाल चौक हो गया, यहाँ पे बहुत अलर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है क्योंकि यहाँ सेंसिटिव एरिया है। तो मतलब हर सिचुएशन और हर टाइम हमें अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे साइलेंसर पिस्तौल से ज़्यादा वो करते हैं, तो फिर ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। मैम 2018 में हम लोग यहाँ पे आए तो बहुत डर लगता था कि बाहर इतना पत्थरबाजी होता था और बाहर निकलने के बहुत डर लगता था मैम। और हमारा प्रोटेक्शन इतना रहता था ना, बहुत प्रोटेक्शन रहता था। और 370 हटने के बाद है ना मैम, बहुत फ्रीडम है यहाँ पे, पत्थरबाजी बिल्कुल नहीं होता है अभी। वहाँ पहले हम लोग चेकिंग पिस्किंग करते थे 2018 में, तो वहाँ पे तो बिल्कुल पब्लिक कोऑपरेटिव नहीं करते थे। जैसे 370 हटने के बाद पब्लिक पूरा कोऑपरेटिव करने लगी। Even though the male and female commandos go through the same training, in case of women, there are some biological challenges like menstruation. Women in CRPF agree that while they bleed every month, it has never been a hindrance to their work. ये डेली वेयरिंग वाली पैंट है मेरी सुबह से, तो इसकी छोटी पॉकेट है जो उसमें परमानेंट रहता है। अगर बाहर निकलना हो तो बीच पे रहेगा बाहर जाने के। और वैसे अगर अपना ग्राउंड में किसी के पास नहीं भी हो तो सबको ब्रीफिंग है कि 1-2 रखो, अगर मेरे पास नहीं है तो इसके पास पक्का मिल जाएगा मुझे। और अगर ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन होती है कि कहीं ट्रेनिंग पे गए हो, ऑफिस पे गए हो, तो क्या करते हो उस टाइम पर? अचानक से सोचो ऐसा बाथरूम नहीं, जैसे हम अभी स्नो वाले एरिया में थे तो वहाँ पे तो बाथरूम है नहीं, राउंड फिगर में कवर कर लेते हैं गाड़ी पैक करके। अगर कुछ भी नहीं है, गाड़ी है तो गाड़ी में करते हैं, नहीं तो राउंड फिगर में कैप मतलब घेरा बना लेते हैं बाहर की तरफ फेस करके, और जिसको प्रॉब्लम है वो अंदर अपना। While in Kashmir, it's usual for women to use vehicles to change sanitary napkins, in Chhattisgarh, however, it is a luxury due to the dense forest coverage in the state, through which the soldiers make their way to reach posts. The sun rises in this part of the state as early as 6 a.m. and within no time, the scorching heat adds to the difficulties, with the rays so brutal and dry that one's bones could melt to the ground. The Central Reserve Police Force is deployed in Naxal-affected areas, having its base in remote areas of Chhattisgarh. One of the battalions performs important tasks like area domination exercises, which play a key role in this deployment. Some of these women hail from remote villages of Bastar district, coming from a humble background, aspiring to be a Jawan since a very young age. Let's hear their stories. In the company camp of Bastaria Battalion 241 in Chhattisgarh, 45 male and female personnel have been assigned to clear the road access for vehicles leading to Sukma. Led by a woman assistant commandant, they are divided into 3 teams. 1 to clear the main road, the other 2 to monitor the forest route. 2 teams are led by women. Battalion 241 is tasked with curbing Naxalite activities in the state and has both men and women soldiers. The forest walk alone was around 5 kilometers without any stoppage. In this dense forest of Bastar, as we walk with these women, they tell us about how many of these women who have joined CRPF had not even informed their families when they applied to the CRPF. The reason is fear. मेरे घर में सभी को पता था मैम, बस मम्मी पापा को नहीं बताए थे। उनको 2 साल बाद पता चला कि फलाना जगह में। 2 साल बाद कैसे पता चला? आपने बताया कि उनको पता लग गया? वो हमेशा बोलती थी ना, तो फ़ोटो दिखा, तुम लोग के ट्रेनिंग वाला फ़ोटो दिखा, अब नर्सिंग करने गई है तो तेरी फ्रेंड लोग का फ़ोटो दिखा। मैं नेट में सर्च कर रही थी नर्स वाले लोगों का फ़ोटो, तो अचानक मेरा फ़ोटो सामने आया वर्दी वाला, तो देख लिए। तो बोले कि तुम लोग पुलिस में गए और बताए भी नहीं, बोल के ऐसे बोल के मम्मी रोने लगी। फिर 2 साल बाद मम्मी को पता चला तो पापा को भी बताए, फिर पापा कुछ नहीं बोले तो मम्मी रोने लगी। अभी तो सब ठीक है। The women are afraid that Naxalites in their villages will target their families if they learn they have joined the CRP. हमको तो पता है लेकिन उनको हम लोग को पता नहीं ना मैम। जैसे मान लो बस रुका गया तो कंपलसरी, हम लोग पहले भी पता था ये, मतलब बीच बीच में कुछ लोगों को बस रोकता है
तो ध्यान रखना करके। फिर हम लोग एक बार मेरे साथ हुआ था, लेकिन मैं क्या डर गई हुआ थी। था आपके साथ? जैसा बस रोका था, बस रोक के फिर पूछताछ करता है उन लोग को, मतलब जैसा चेकिंग करना उनको, अगर उनको कुछ मिलने के लिए, और बैग भी चेक कर लेता है, वो कर लेता है। लेकिन उस दिन है ना, मैं कुछ भी मेरे पास आया नहीं। लड़का लोगों को मतलब ऐसा उठा उठा के, पर्दा रहता है ना बस में, हाँ। ऐसा उठा उठा के देखता है, लेकिन सोचा होगा। लेकिन मेरे पास कोई लगेज नहीं था उस टाइम में। लगेज में बस का बैक साइड में रखा था। सिर्फ मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, क्योंकि फ़ोन को भी स्विच ऑफ करके मैं बैग में डाल दिया था। वेट बढ़ता है, मैं अंडरवेट हो गई हूँ। Back in Srinagar, after dinner, there's absolute silence in the barracks of Battalion 135. The women retreat to their rooms and get some sleep before they repeat the drill next day. As women get ready for bed, that is when the mood lightens after a long day. नागिन 6 देख रही हूँ। नागिन पसंद है आपको? बहुत ज्यादा। शाहरुख के फैन तो सभी है। मुझे तो अक्षय कुमार को वोट दे दे। मुझे अक्षय कुमार की हंसी बहुत अच्छी लगती। Almost every woman at the barracks is on a video call back home wishing their families a good night. But this wasn't possible when women were recruited in the first batch of 1986. They had to wait days to hear from their family and their loved ones. Basanti Verma and Anju Kumari, the senior most personnel at the barracks, are among the few women who were recruited in 1986, which was airlifted to Jaffna in Sri Lanka to assist the Indian peacekeeping forces. Both women are in their 50s now. रिटायरमेंट होने के बाद बेटे की शादी कर दूंगी, और मेरी मम्मी थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की, और मेरी वजह से वो कहीं मैं ले जा नहीं पाई हूँ, तो मैं मम्मी को घुमाऊंगी। करते हो, पोस्ट के लिए जाते हो तो एक दूसरे को कवर देते हुए जाएंगे। Over the last 37 years, they have seen the CRPF evolve and grow. More women, better weapons, training and infrastructure. The 1986 batch are planning for their next mission, retirement. मैडम प्रोसीडिंग ऑन सुपरडेशन, अभी मेरा नौकरी खत्म, अब मैं घर जा रही हूँ। बस रिटायर कब है आपका लास्ट? गॉड थैंक्स, को एक्सेप्ट फॉर कब है आपका रिटायरमेंट? लास्ट दिसंबर में। कितने साल दिए आपने? 37 years. For ThePrint, this is Urjita Bhardwaj with Manisha Mondal reporting from Srinagar, Imphal and Bastar.